بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and my dear students, Assalamu alaikum. I hope आप सब खैरियत से होंगे. Dear students, क्या आपने मैथ्स की वीडियोस देखी और आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें. आओ बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं. दिस इज़ योर मैथ्स क्लास. Okay, now we will read numbers poem. 1, 2, how are you? 3, 4, wash the floor. 5, 6, touch your lips. 7, 8, open the gate. 9, 10, tiger in the den. Dear students, today our topic is formation of tree. Yes, formation of tree. बच्चों आज मैं आपको ट्री की फॉर्मेशन सिखाऊंगी कि ट्री सैंड के ऊपर कैसे लिखा जाता है, हवा में कैसे लिखते हैं, मैथ्स के ऊपर हम ट्री कैसे लिखते हैं. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले बच्चों आप अपनी 2 फिंगर्स को ऐसे करें हवा में. यस, बिल्कुल सही. अब हम हवा में लिखेंगे 3. halfway round to make number 3. Yes, this is 3. halfway round to make number 3. Yes. Okay students, look at here. Which number is this? Yes, this is 3. I will repeat. Look at here. halfway round to make number 3. Yes. Okay students, look at here. What is this? Yes, this is sand. ये sand है, हम इसको रेत भी कहते हैं उर्दू में. ठीक है. ओके बच्चों, अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि सैंड के ऊपर 3 कैसे लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हम जब हवा में लिखते हैं तो हम 2 फिंगर से लिखते हैं और जब सैंड पे लिखते हैं तो हम 1 फिंगर से इसके ऊपर लिखेंगे. लुक एट हियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसमें 3 लिखेंगे. halfway round to make number 3. Yes, look at here. Now which number is this? 3. Yes, this is 3. Okay, now look at here. Now I will write again. halfway round to make number 3. Okay students, now this is 3. Which number is this? 3. Which number is this? 3. Yes, now look at here. Now this is 3. Which number is this? 3. बच्चों हम कौन से नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही. वेरी गुड. हम 3 के बारे में पढ़ रहे हैं. बच्चों कौन से नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं? 3 के बारे में हम पढ़ रहे हैं. 3 mean 3 things. 3 mean 3 things. Dear students, अभी हम मैट के ऊपर 3 लिखेंगे और मैट के ऊपर भी हम 3 1 फिंगर से लिखेंगे. Look at here. Now I will write 3. halfway round to make number 3. Yes, students, tell me which number is this? Yes, very good. This is 3. Which number is this? 3. Look at here students. Now tell me which number is this? 3. And how I will write 3 on mat like this. halfway round to make number 3. Very good. Yes. Okay students, look at here. Now open your book page number 19. Yes, which page? 19. 19. And the topic is trace and write 3. There you will write trace 3
and there you will write 3 and the proper line. Okay student, look at here this picture. You will color this picture. Okay? Okay, now look at here. This is poem of 3. Now look at here. 3 cats with bed. Yes, 3 cats with beds. 3 cuddly puddly cats holding beds, pouring with glee, up and down and round about, but no ball that one can see. Now I will read and poem tone. 3 cuddly puddly cats holding beds. 3 cuddly puddly cats holding beds, pouring with glee, and up and down and round about, but no ball that one can see. Okay, students. Is Okay, students, look at here. Look at this picture. How many cats are there? Yes, very good. These are 3 cats. Can you count this? Yes. 1, 2, 3. There is 3 cats. And how many beds they are holding? Yes. Tell me. 1, 2, 3. Yes, very good. There is 3 beds. There is 3 beds. Dear students and dear parents, अपने बच्चों के साथ बैठकर मुख्तलिफ तरीक़ों से 3 की पहचान करवाएं और बच्चों को कलरिंग का तरीके भी अच्छे तरीके से सिखाएं। ओके पेरेंट्स, अपने बच्चों को टाइम दें। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपना होमवर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.